हाय गाइस, आई एम संजना फ्रॉम पीटीकाच। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन बॉक्स लगाया था और यूट्यूब पे भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं सबका रिप्लाई करूंगी QnA वीडियो में। तो ये मेरे चैनल का सबसे पहला QnA वीडियो है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर यूजिंग कर्ल क्रीम एंड कर्ल जेल आई फील माई हेयर हार्ड, व्हाई आई डोंट फील माई कर्ल्स एंड हेयर सॉफ्ट? Because you are having gel cast and gel cast is very good thing। दो मरे जाते जेल कास्ट के लिए और आपको मिल रहा है, आप उसके लिए बोल रहे हैं कि ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। जेल कास्ट अगर आपको हो रहा है ना, देयर इज़ अ वे टू ब्रेक दैट जेल कास्ट एंड यू विल हैव वेरी सॉफ्ट कर्ल्स। जेल कास्ट का मतलब ही है कि आपको लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स मिलेगा और आपका कर्ल बहुत डिफाइंड रहेगा बहुत दिनों के लिए। ओके, सो जेल कास्ट कैसे ब्रेक करते हैं? जैसे आपको अगर अभी जेल कास्ट है तो आप ऐसे क्लैपिंग मेथड में या ट्विस्टिंग मेथड में या फिर ऐसे स्क्रंच करके आप जेल कास्ट को ब्रेक कर सकते हैं। बट ये तभी करना जब आपका बाल पूरा का पूरा 100% ड्राई हो जाए एंड उसके बाद आपको बहुत ही सॉफ्ट नरिशिंग बहुत ही अच्छा वाला डिफाइंड वाला कर्ल्स मिलेगा। ऑल्सो अगर आपके हाथ बहुत ऑयली है, ग्रीजी है, तो आप एक सैटिन क्लॉथ लेके भी कर सकते हैं। या इफ योर पम्प्स आर वेरी ड्राई देन यू कैन टेक 2 to 3 drops of oil and then you can do that scrunching, that clapping, that twisting to break the gel cast. Next question is, please suggest me any product to remove blackheads in nose and also which moisturizer should I use? So for removing blackheads and whiteheads on nose and chin areas and other areas, you need to use a salicylic acid serum followed by a niacinamide acid serum. Don't use the nose stripes, it will rip off with all the blackheads and whiteheads and also your skin barrier and your natural skin oils. That will lead to skin barrier damage and excessive production of oil. And उससे क्या होगा, उससे और भी ज़्यादा blackheads and whiteheads, clogged pores ये सब हो जाएगा। तो बिल्कुल भी वो यूज़ ना करें। आप एक salicylic acid serum followed by niacinamide acid serum 4 to 5 times a week आप यूज़ करें। एंड ऑल्सो एक्सफोलिएटिंग सीरम्स यूज़ कर सकते हैं। वंस अ वीक आप एक्सफोलिएट कर सकते हैं अपने स्किन को। विच मॉइस्चराइजर यू शुड यूज, इट डिपेंड्स ऑन द योर स्किन टाइप। लाइक इफ यू हैव ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, यू कैन यूज डॉटन की दैट blue one or that green one that is very lightweight। and also if you have oily skin, go for Cetaphil Dam moisturizer, that is pretty good for oily skin people, sorry, dry skin people। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीदी एक्चुअली आई हैव ईस्ट विथ ब्रेस्ट सेप और मैंने यूट्यूब पर देखा है काफ़ी वीडियोस फॉर राइट ब्रा। ओके, सो आई विल गेट बैक टू यू इफ आई फाइंड एनी, आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, next question is, I have lot of hair fall, I don't know why and always have dandruff. So for hair fall I have already said that I will link the video in the description. I have an extensive video on it, and for dandruff also I have an extensive video. But for now I will suggest you to use a ketoconazole shampoo every day whenever you wash your hair. Okay, so that will help you reducing the dandruff, and also followed by a conditioner because ketoconazole shampoo are very much harsh on your hair, so that's why. Also don't oil your hair at all, not on the scalp at least, because dandruff का जो फंगस होता है मेलासेजिया, उसका खाना ही होता है ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू ग्रो द हेयर? My hair are not growing from past 7 years, so I have a video on it that how I grow my hair also, and I will be sharing my daily routine for hair growth in next week. So please guys subscribe to my YouTube channel and hit the bell button. Okay, the next question is, how to maintain my curls after routine day? So I have already shared a video on it that how you can keep your curls over the week. So I'll be linking that video in the description box. Please check it out. But for now I will say that you should protect your curls with satin accessories like satin scrunchies, satin bonnet, satin pillowcases. You should sleep on it. Use strong wool gels, and also you can refresh your hair with a mousse on day 2 or day 3 hair. You can do protective hairstyles. Don't open your hair and roam around also. The next question is, I have curly hair and it's not growing from after certain level and notice splittens and breakers. Okay, so for hair growth I have a video, I have already said, you can check that. And for the splittens also I have a video, but for now I will say that you need to deep condition, you need to do bond repair treatments on your hair length, and all those things I have mentioned in the splitten video also. And also take 2 to 3 drops of oil every day at night, and
or serum and then apply on your hair length so that you can keep it moisturized and it will not lead to breakages and split ends. Next question is, does fix my curls cause hair fall? Also, will the curl last for 4 to 5 days? So yes, the curls last for 4 to 5 days. You can't expect that on day 1 hair or day 2 hair how lovely my curls are looking, that will look on day 5 or day 4 here. That won't happen because curls will get frizzier day by day, right? So that is why yes, 4 to 5 days it can last, but I don't recommend. I recommend washing your hair every 3rd or 4th day or whenever you want at least. Does Fix My Curls cause hair fall? No, Fix My Curls or any other branded products what I have reviewed for you does not cause hair fall. It can be the reason that you are using it in a wrong way. Like if you are using Fix My Curls stylers on your scalp or conditioner on your scalp, that will lead to hair fall. It's not meant to be applied on your scalp. It's meant to be applied on your hair length. So no, Fix My Curl doesn't cause hair fall. The next question is, any best shampoo and conditioner to treat hair fall? Okay. Please understand, no shampoo or conditioner can reduce your hair fall. It cannot make any difference on your hair fall because कितना ही रहता है, कितना टाइम रहता है आपके स्कैल्प पे शैम्पू कंडीशनर तो स्कैल्प पे रहता भी नहीं है, इसका कंडीशनर तो रहता है सिर्फ इधर. सो कंडीशनर आपका हेयर ब्रेकेज कम कर सकता है बट हेयर फॉल का उससे कोई लेन देन नहीं है. हाँ, कंडीशनर स्लिपरी होगा तो कर्ली हेयर के लिए अगर आप शावर में डिटेंगलिंग करती हैं तो वो स्लिपरी होगा तो हेयर फॉल कम होगा, बट इट डजंट डायरेक्टली लिंक टू हेयर फॉल, राइट. एंड शैम्पू भी सेम. ये जो मार्केटिंग गिमिक है ना, एंटी हेयर फॉल शैम्पू, एंटी हेयर फॉल कंडीशनर, ये सब मार्केटिंग गिमिक है, तो इस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें. आप हेयर ऑयल, सर्गो सीरम, स्कैल्प मसाज, इसके ऊपर ध्यान दीजिए हेयर फॉल कंट्रोल के लिए. ऐसा कुछ नहीं होता कि शैम्पू एंड कंडीशनर से हेयर फॉल रिड्यूस हो जाता है या फिर कंट्रोल हो जाता है. सो ये सब फालतू की बातें हैं, एकदम ही ना पड़े इसमें. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लव दैट नेक पेस्ट, वेयर इज इट फ्रॉम? सो ये वाला नेक पेस्ट के बारे में आया था. ये है ambika.india बोल के एक इंस्टाग्राम पेज है. ये एंटी टार्निश है. मैं इस पे ही शावर लेती हूँ, ये पहन के मैं सब कुछ करती हूँ, बाहर जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ. और मैं ये खरीदी थी आई थिंक अप्रैल में और अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है. एंड दिस इज़ वेरी गुड क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी. दिस इज़ वेरी रिजनेबल. आई थिंक ये मुझे 449 या 499 में मिला था एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड. So you can get it. I will link her Instagram page in the description box. So the next question is your age and education. So basically my age is 23 and I have done geography honors and after that I have done digital marketing, social media marketing and management, and after that I started content creation. Next question is, please suggest a hair serum for curly wavy hair. Will it work if we skip curl cream or leave in and use only serum? No. If you skip curl cream or leave-in on curly and wavy hair, it will not work. Only serum won't work. It is for only straight hair people. Or if you want to use hair serum, then you can use it after curl cream and gels. You can use L'Oreal hair serum. You can use Biolage hair serum. You can use Juicy Chemistry. You can use Vilva's anti-frizz hair serum also. Also curly and avocado, Bravocado anti-frizz hair serum also. These serums are very very good. Single hair moisturizer for dry hair. So she has straight hair, so for that I will suggest her to use hyaluronic acid hair cream from L'Oreal Paris, and their leave-in conditioner, they have a leave-in conditioner also, that orange one, that is also very good for straight hair. And for curly hair there are so many, but for single hair moisturizer I will choose curl cream. That is very good. So that's it for today's video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव दिस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे. बाय बाय.